Hi guys, welcome back to another outline drawing video. In this video, I'll show you how to draw cherries. Well, this is a still life painting. I'm going to paint this drawing with watercolor later on. So this is a still life art where you draw still life images. So today in this still life drawing, I have chosen to draw fruits and here the fruit is cherry. सबसे पहले चेरी ड्रॉ करने के लिए आई हैव ड्रॉन देयर स्टेम्स फर्स्ट एंड उसके बाद मैंने दो सर्कल्स बनाए टू गिव अ गाइडलाइन ऑफ द शेप ऑफ द चेरी एंड ऑन टॉप ऑफ इट आई ड्रॉ द एग्जैक्ट शेप ऑफ द चेरी. मैंने रेफरेंस इमेज पिंटरेस्ट से लिया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. यू कैन चेक आउट द इमेज एंड यू कैन ड्रॉ ऑन योर ओन. बाय द वे, इस ड्राइंग को करने के लिए मैंने कोई ग्रिड मेथड यूज़ नहीं किया है. And I'll also suggest you to not use grid method on a beginner level because grid method से आप सिर्फ reference image को copy करते हो. You don't understand the basic proportions. But when you start drawing on your own, using on your own hand, using your perspective on the image, then आपको समझ में आता है कि ड्राइंग को कैसे करना होता है. एंड इस ड्राइंग को मैंने फ्री हैंड से ड्रॉ किया है ताकि आप सीख सको कि फ्री हैंड ड्राइंग कैसे बनाना होता है, कैसे धीरे धीरे ओवरऑल शेप को ड्रॉ करना होता है बाय द हेल्प ऑफ द गाइडलाइंस. यू कैन सी पहले मैंने स्टेम ड्रॉ किया है, उसके बाद जहाँ पे स्टेम एंड द फ्रूट मीट होता है वहाँ पे एक कर्व है उसको ड्रॉ किया है एंड उसको पकड़ के मैंने जो अपर लेवल कर्व है फ्रूट का उसको ड्रॉ किया है. देन आई हैव ड्रॉन द बॉटम curve of the cherry, and in this way I have completed the whole drawing. So if you like watching this video, please like and share this video as much as you can, and do subscribe my YouTube channel for more tutorials. And if you're watching this video from Facebook, then don't forget to like my Facebook page. You can also check out my Instagram from the link in the description. See you in the next video. Bye.